Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. So today we are going to study about one of the most important antibacterial drug which is classified as aminoglycosides. और ये aminoglycosides ये जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उसे कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के बारे में हमने पूरी डिटेल के साथ इससे पहले लेक्चर ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था कि ये किस तरह काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो आज हम स्पेसिफिकली aminoglycosides के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे कि इस तरह काम करता है। तो सबसे पहले ये बैक्टीरिया में एंटर होता है। इट एंटर इनटू द बैक्टीरिया थ्रू द बैक्टीरियल सेल वॉल एंड दिस एंट्री इनटू द बैक्टीरियल सेल वॉल इज ऑक्सीजन डिपेंडेंट। Oxygen dependent means that it's required oxygen for its entry into the bacteria through the bacterial cell wall into the bacteria. So it means that only aerobe will be the target of these drugs because only aerobe use oxygen for their metabolism or other activities. So anaerobes will be not the target of these drugs. So now when it enters into the bacteria through the oxygen dependent process, it binds with the 30S subunit of the ribosomes. 30S subunit of the ribosome is हमने जिस तरह पढ़ा था कि there are two types of protein synthesis inhibitor हैं. The first one which binds with the 50S and the second one which binds with the 30S subunit of the ribosomes. So after it binds with the 30S subunit of the ribosome, it interferes or stops the protein synthesis in two ways, the first one and the second one. It stops the protein synthesis in the first one way by interfering with the formation of functional ribosomal apparatus. ये functional ribosomal apparatus के synthesis को और उसके formation में interfere करता है, इसको रोकता है and thus inhibit the initiation of protein synthesis. इसी तरह ये जब functional ribosomal apparatus नहीं बनेगा तो इसी तरह प्रोटीन सिंथेसिस की इनिशिएशन नहीं होगी और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। दूसरा जो मैकेनिज्म है ये है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इट्स कॉज misreading of the codon in the messenger RNA. It cause misreading of the codon in messenger RNA by ribosomes during the elongation process of translation. ट्रांसलेशन के elongation process होती है जिसमें ऑलरेडी प्रेजेंट जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है इसके साथ न्यू अमीनो एसिड्स कंबाइन होकर पूरा पेप्टाइड चेन बनाते हैं, पूरा प्रोटीन बनाते हैं। तो aminoglycoside क्या काम करता है कि मिसरीडिंग करता है आप कोडान को। मिसरीडिंग ऑफ कोडान ये है कि एक कोडान जो होता है उसके साथ कम्प्लीमेंट्री एंटी कोडान बाइंड होता है। तो aminoglycoside इस कोडान की मिसरीडिंग करके उसके साथ आलत एंटी कोडान को बाइंड करता है, एंटी कोडान को बाइंड करता है। और इसी तरह ये जो है प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इसमें यह प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होती है क्योंकि अगर एक एंटीकोडान की बजाय दूसरा एंटीकोडान बाइंड हो जाए तो प्रोटीन की सिंथेसिस स्टॉप भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर स्टॉप कोडान आ जाए, स्टॉप कोडान का जो कोड है उसका जो एंटीकोडान है अगर आ जाए तो इसी तरह प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी हो सकती है। दूसरा होता है कि इंसर्शन ऑफ रॉन्ग अमीनो एसिड्स भी हो सकता है। स्टॉप कोडान नहीं आया लेकिन अमीनो एसिड आए लेकिन वो रॉन्ग था, उसका जो कोडान था उसके कम्प्लीमेंट्री एंटीकोडान नहीं था लेकिन रॉन्ग अमीनो एसिड आया यानी गलत पोजीशन पर आया। तो इसी तरह ये दोनों जो है ये दोनों वो डिफेक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस, इट कॉज डिफेक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस, दिस प्रीमेच्योर टर्मिनेशन and the insertion of amino acid into the protein, this both cause defective protein synthesis. Now when this defective protein synthesis is formed, this defective protein synthesis is an unfunctional protein, and as we know that unfunctional protein cannot work, they cannot maintain its normal function, so it cause the bactericidal effect, i.e. it kill the bacteria.
दूसरा जो है डिफेक्टिव प्रोटीन जो है इट इंसर्ट इनटू अ सेल मेम्ब्रेन, या सेल मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो जाता है और इसी तरह ये इस सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को चेंज कर लेता है, इसमें अल्ट्रेशन लाता है। और जब इसकी सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में चेंज लाता है तो इसकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसी तरह इसकी जो कंटेंट्स होते हैं, जो सेल के बैक्टीरिया के कंटेंट्स, ये लीक्ड आउट, इट लीक्ड आउटवर्ड एंड दस कॉज द किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, आई बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ कि प्रीमेच्योर, या सबसे पहले तो प्रोटीन बनते ही नहीं है, ये पहला हुआ। दूसरा प्रीमेच्योर प्रोटीन मानी टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन, पूरे मुकम्मल प्रोटीन नहीं बनते। दूसरा होता है कि रॉन्ग प्रोटीन बनते हैं, इंसर्शन ऑफ अमीनो एसिड्स इनटू द प्रोटीन। इसी तरह ऑल ऑफ दीज रिजल्ट इन द defective protein synthesis, and they cause the death of the cell by this mechanism, i.e. through formation of unfunctional protein or insertion of these defective protein into a cell membrane which alters its permeability and thus cause bactericidal effect। ये इसका मैकेनिज्म हुआ। अब आते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। सो फार्माकोकाइनेटिक्स, इसकी एब्जॉर्प्शन जो है, एज इट इज पोलर, अमीनोग्लाइक एसिड इज पोलर, so it is poorly absorbed from the GI tract, so we usually give it in the form of parenterally or through other route। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट द बॉडी है, बट इट डोंट क्रॉस द CSF, i.e. cerebrospinal fluid membrane, and it also important point is that it cross the placenta, it can cause metabolism जो है, it does not occur in the body and it is excreted unchanged from the body, its metabolism does not occur in the body। Now coming towards the drugs which present in the aminoglycosides. So the aminoglycosides are streptomycin, gentamicin, tobramycin, neomycin, primycin, supramycin, amikacin and the paromomycin। Now talking about each of the drugs and इसके important points के बारे में, तो सबसे पहले जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि इट इज़ द फर्स्ट लाइन ड्रग अगेंस्ट द TB caused by Mycobacterium tuberculosis। It is the first line drug against the TB। The second drug is the gentamicin। So it is mostly important, is the most commonly used drugs for the aerobic gram-negative broads like Proteus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, and Pseudomonas aeruginosa। And this gentamicin is also effective against the gram-positive cocci like Staphylococcus and Streptococcus। So it is the most commonly used drugs, gentamicin। The third drug is the tobramycin, and it is same as the gentamicin but has increased activity against the gram-negative broad Pseudomonas aeruginosa। So it is mostly used against the infection caused by these drugs। The fourth drug is the neomycin। So the important point regarding neomycin that it is highly nephrotoxic, as it starts with the N, so it means nephrotoxic, and we never give it systemically. Its use is it is mostly used topically applied on the skin, for the skin and soft tissue infections, for the eye and external ear infections। It is usually for the skin and soft tissue infection and for the eye and external ear infection। It is sometimes given orally for the local uses, i.e. its absorption is greatly decreased, so it acts locally in the GI tract, and this action is done for the preparation of the GI tract before the abdominal surgery in order to eliminate the bacteria।
It is also used for the hepatic encephalopathy. So how does it works in the hepatic encephalopathy? That it decrease the or kill the organism like coliform, which helps in the ammonia synthesis. Ammonia synthesis. This decrease the load of ammonia in the body. So it is used in the hepatic encephalopathy. The fifth drug is the premicetin, also called as sopramycin. Premicetin or sopramycin, it is same as the neomycin, highly nephrotoxic. The sixth drug is the amikacin, and it has the broadest spectrum. It has the broadest spectrum among all the aminoglycosides. The important point that it is resistance to aminoglycoside inactivation enzyme, same as the natrilamycin, which is also resistance to aminoglycoside inactivation enzyme, and its use is mainly used for the nosocomial hospital-acquired gram-negative infections, and it is also used for the TB. So the first drug which is used for the TB is streptomycin, and this is the second one. And this amikacin is used in a second line anti-TB drug. The seventh one drug is the ferromycin, and the aminoglycoside. This is the aminoglycoside which has anti-protozoal activity. Anti-protozoal activity. The mechanism against the anti-protozoa or against the protozoa is unknown. We do not know much more about this, but it is active against the disease like amoebiasis, giardiasis, vaginal trichomoniasis, visceral leishmaniasis, also called Kala-Azar. And this ferromycin is also used in hepatic encephalopathy. Now this is the most important for the aminoglycoside. The important points regarding these are the important points for the aminoglycosides. The first important point is that it has dose-dependent bactericidal effect. It means that increasing the dose increase its bactericidal effect. The second one has a long post-antibiotic effect. What is the post-antibiotic effect? It is the continuous suppression of bacteria after brief exposure to antibiotic for 1 to 2 hours, etc. Although the concentration of this antibiotic in the blood becomes minimal inhibitory below the minimum inhibitory concentration. It is the continuous suppression of bacteria after brief exposure to the antibiotic. Although the concentration of this antibiotic becomes below the minimal inhibitory concentration of this bacteria. How does it occur? So its mechanism is very long. It is not under the scope of this lecture, so you can see it in net or any other source. The third important point is that synergistic effect with the cell 1 inhibitor.